Let's come on the next question, question number 2. If one zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is the reciprocal of the other, find the value of a. Here let px equal to a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a. Let alpha be 1 0, then the other 0, then the other 0 be 1 by alpha, because 1 by alpha is the reciprocal of alpha. Now apply the relation between the coefficient and zeros. Now sum of zeros yani alpha plus 1 by alpha equal to minus 13 upon a square plus 9. This is equation first, and again product of 0 alpha into 1 by alpha equal to 6a upon a square plus 9 in constant term upon coefficient of x square. तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल a. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमें अल्फा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए हैं. क्लियर है बात?